श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणनान्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तच्छ्रेयो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदेः चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Thank you, Swamis and Brahmachari. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। First of all, I am very happy to see you all here on time. Some of you have come before time, so it's a great on your part to see such a enthusiasm. सबका बहुत धन्यवाद और मैं सबका स्वागत करता हूँ हमारे आज के जो जजेस है उनका और हमारे जो कोर ग्रुप मेंबर्स हैं जो पिछले कई दिनों से इस इवेंट के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं आज स्वागत करता हूँ। और हमारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स जो उपस्थित हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सब स्टूडेंट्स इज अ मेजर ingredient of today's function. So today's part, major part. So I welcome all the students and also welcome other volunteers. तो आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर 1893 में 1893 that was historic event happened in Parliament of Regions at Chicago. All of you know. Swami Vivekananda spoke Sisters and Brothers of America. These 5 words itself created a kind of magic among the audience containing 7,000 dignitaries, all
all well-learned scholars, they all got up and started clapping for two minutes. There was deafening applause. That's what the report says. So such magic was created by these 5 words, sisters and brothers of America. क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे स्वामी जी के, उसके द्वारा स्वामी जी ने एक ऐसी शक्ति ट्रांसमिट की थी लोगों में कि लोगों को ऐसा लगा कि रियली वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल वन, वी आर ऑल connected with the God of Paramatma, which is consciousness, which resides within all of us. That feeling was created, and togetherness, that feeling that we are all one, we are all connected, that gives tremendous courage, tremendous joy, and tremendous happiness and peace. So that was created, and to commemorate this, every year we celebrate in our different ashramas in different ways. In Chandigarh Ashrama, last 2 years we are celebrating by conducting elocution competition and also essay competition. So essay competition was conducted. All of you know that all of you got information through your colleges. We circulated that instructions and subject also, and we are happy to mention that around 27 colleges participated and 162 students participated in the essay competition. So first of all, I want to congratulate to all of you to make an attempt on this subject. Reading Swamiji is not a small thing. It's not everybody's cup of tea. So I am very happy and congratulations to all of you, all the participants. और इस टाइम हमारा सब्जेक्ट था कि रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग नेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। मतलब स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के संदेश के अनुसार भारत को सशक्त बनाने के लिए युवकों की भूमिका, तो ये टॉपिक था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सबने बहुत ही सुंदर तरीके से कोशिश की है लिखने की। स्वामी जी को पढ़ा है उन्होंने, और पढ़ने के बाद अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसको समझ के अच्छे लिखने की कोशिश भी की है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा मेन पर्पज यही था, मेन पर्पज कंपटीशन वगैरह नहीं था। कंपटीशन इज ओनली ए काइंड ऑफ ऑकेजन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन आवर। हमारा मेन पर्पज था कि आपको हमारे देश के बारे में, हिस्ट्री के बारे में या कल्चर के बारे में और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में और हम क्या कर सकते हैं एज ए यूथ, एज ए फ्यूचर जनरेशन, व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री एंड व्हाट स्वामी सेज, स्वामी विवेकानंद सेज। दैट वाज आवर मेन पर्पस एंड वी आर हैप्पी दैट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी आर सक्सेसफुल इन आवर मेन पर्पस बिकॉज वी ऑल हैव read Swami Vivekananda, we have attempted to explain according to your own understanding and own intellect. So I am very happy about that, and that was main purpose and then process. So कैसे हमने ये ऐसे कंपटीशन कंडक्ट की, तो पहले तो सबको इन्फॉर्मेशन मिली थी। सब कॉलेज ने बहुत ही अच्छा हमको सपोर्ट दिया और सब कॉलेज ने नोटिस बोर्ड पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी। और इन एंड अराउंड चंडीगढ़ मेनली वी कॉन्टेक्टेड इन अराउंड चंडीगढ़ जो कॉलेज थे उनको कॉन्टेक्ट किए थे और बस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड। और उसके बाद हमको ईमेल के द्वारा और हार्ड कॉपीज दोनों मिलके अराउंड 162 एसेज हुए थे। ईमेल में ज़्यादा थे, आजकल वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई है तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है, तो ईमेल से भी लोग दे सके स्टूडेंट्स। और सबको इकट्ठा करके हमने आवर टीम ऑफ वॉलंटियर्स, एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन टीचिंग फील्ड, दे इवैल्यूएटेड ऑल द एसेज। तो एसेज इवैल्यूएशन के समय there were so many factors we considered. Originality of ideas, कितने ओरिजिनल हैं, और relevance to the topic, जो टॉपिक था रोल ऑफ यूथ इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। इस टॉपिक के अनुसार कितना लिखा है और कैसे प्रेजेंटेशन है और कैसे लैंग्वेज है, ये सब ऐसे फैक्टर्स इकट्ठे उसको मार लेके बाद में हमने शॉर्ट लिस्ट 15 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया है।
अभी वो 15 स्टूडेंट्स जो है, they will be called now to present their elocution, to present their speeches. Each student will speak for 5 minutes. They will be called, and their speeches also will be categorized or evaluated in so many factors like confidence, how much confidence they have, or presentation, कैसे present करते हैं, depth of analysis, उनका analysis कैसा है, idea जो है, और कैसे contents हैं, contents are should be related to topic, और of course reading or without reading, पेपर भी कोई पढ़ सकते हैं लेकिन मार्क्स थोड़े कम हो जाएंगे, और रिस्पेक्ट टू द अलॉटेड टाइम, क्योंकि टाइम दिया है 5 मिनट, और ये सब आपको और एक बार इंस्ट्रक्शन हमारे सुधीर गोयल से देंगे, लेकिन मैं एक नक्शे में आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट सबको टाइम दिया जाएगा, और 4th मिनट यू गेट वन वार्निंग बेल, दैट डज नॉट मीन यू शुड वाइंड अप इमीडिएटली क्विकली अब्रप्टली, सो डोंट गेट एंग्जियस, 1 मिनट विल बी देयर टू वाइंड अप वार्निंग। अभी 5 मिनट कुछ कम नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद 3 मिनट बोले थे, 3 मिनट में उन्होंने पूरा ऑडियंस को कॉम्पर किया, तो 5 मिनट इज टू मच, 5 मिनट में बहुत कुछ आप आइडिया दे सकते हैं। अच्छा, आफ्टर ऑल स्पीचेस आर ओवर अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल बी ओवर अराउंड 11:15, उसके बाद चीफ गेस्ट आएंगे, सुरेश कुमार जी है जो IAS ऑफिसर थे, वो आएंगे, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगा ऑल द विनर्स, और प्रोग्राम विल कंक्लूड with a lunch prasad to all around to be concluded at around 1 o'clock. So सबको lunch prasad देना है, और सबको you all will get one book and participation certificate. So don't forget to collect your participation certificate and book. Your names are printed on that. So please tell your name and your roll number, registration number to the counter. The counter will be set after the program is over. You can collect those participation certificates before you depart from here. So with this I conclude my this introduction, and all the best to all of you, and for your life journey also, कुछ करके दिखाएंगे भारत को सशक्त बनाने के लिए। थैंक यू। Have already taken their seats, and it's time for us to felicitate them. Elocution, that's important. Your elocution will be adjusted and should be based on exactly the submitted essay, which has already been assessed. The evaluation will primarily be based on these 4 parameters. 1, the originality of the content, expression and voice modulation, audience connect is very, very important, and what even Swamiji used to say, confidence and your overall presentation. So, raise up. So, I'll be just starting and coming up with the names, but before we start his opening speech on the inaugural day of the modern world's very, very first interfaith dialogue Parliament of Religions held in 1893 Chicago. This was the day when this nameless Swami, now we know as Swami Vivekananda, that was the beginning of his illustrious career. This was the day that marked the beginning of his illustrious journey of selfless service to humanity, to human emancipation, to human development, upliftment of the masses. Since this speech was delivered, Reverend Ramakrishna Mission Ashram also, we have been daily celebrating this celebration. Today marks this 151st anniversary. We are holding the finale of the essay and elocution competition on role of youth in building a strong nation. Sisters and brothers of, now I say Chandigarh, sisters and brothers of Chandigarh, let's commence the beginning of today's event with a huge round of applause. So, quick also while coming up the stage, sorry, it is. My belief is in
A very pleasant morning to the August gathering. Today, I am going to speak on the topic, Role of Youth in Building a Strong Nation according to Swami Vivekananda. When we talk about the role of youth in building a strong nation, it is similar to that of the soil in the development of a plant. We cannot imagine a blade of grass without soil. The same way, we cannot dream of a strong nation without an active presence and participation of the youth. Moreover, nation building is not an alien concept, but it is a process that can be traced through the character building of the youth. And as Swamiji says, the first word that demands our attention for this is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Puranas must be brought out from the books and scattered all over the land. These teachings lay the foundation for morality, spirituality and rationality in any society and lay the foundation for nation building. Once the foundation has been laid, it is the responsibility of the youth to bring inclusive participation of all the segments of society. Because no growth is called development until it is inclusive. It is the youth's responsibility to make sure that the social, economic and political setup doesn't violate the rights of vulnerable sections. We cannot go and ask a little girl whose feet is torn and belly is falling with hunger if she cares about her daddy's birth ethics. She does not. She doesn't have the time to think about her own ethics. No morality prevails when the belly is not filled. Hence, it is the responsibility of youth to stand for those who are unable to do so either because of their weak social or economic background or ignorance. Because being a pigeon allows the cat to relish everything. Here is where the leadership role of youth comes into play. In this era of globalization, it is imperative to shape the right narrative about our country and culture, both at home and abroad. And what comes to our rescue for this is our soft power, and the youth serves as the perpetual ambassador for our soft power. What is India's soft power? Does it end with those 5 pillars of dignity, dialogue, shared prosperity, regional and global security, cultural and civilizational links? No. The Indian youth, which has from time to time glorified this magnificent land with their contributions, be it King Bharata or Bhaskaracharya, be it Vardhamira or Vivekananda, be it Aryabhat or Sushrutam, that is the most magnificent soft power this land ever had. The Indian education in sciences, be it Leelavati or Sushruta Samhita, 21st June being celebrated as International Day of Yoga is our soft part. The Indian epics, the Indian Puranas, and also over 650 million people watching Ramayana during the time of COVID, making it the highest viewed entertainment program ever. This is our soft part, and it clearly shows that the world needs Indian morals and values in 21st century more than ever. Hence, it is the responsibility of the youth to understand its river-like religion, to understand its river-like morals and values, which has not only nourished the land, but also guided the people's way of life from time to time. As remarked by Swami Vivekananda, it is a matter of immense honor and pride for each one of us that we belong to a religion that has taught the world not only religious tolerance, but universal acceptance. When the youth ignites the fire in his belly for perfection and learning, the way Satyakama Jabala did, the way Eklavya did, a robust and anti-fragile nation is bound to be built. To conclude with the most beautiful and inspiring words as remarked by Swami Vivekananda, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Thank you. मेरा नाम शिवानी मौर्य है और मैं वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्षेत्र 46 चंडीगढ़ में BA तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण से सशक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा करना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आते ही हमारे मन में एक जीवन और प्रेरणादायक छवि बढ़ती है। उनका संदेश उठो और जागो और
उनके अनुसार एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की नींव शिक्षा, आत्मनिर्भरता, मौलिकता और नैतिकता पर आधारित होती है। उन्होंने हमें सम्मान से जीने और युवाओं की भूमिका पर, महिलाओं की शिक्षा और उनके सम्मान पर भी चर्चा की। और उनको भी कुछ सूझ नहीं रहा था, but once he was on the stage, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर जब when you are sitting there, take deep breaths, put a broad smile on your face, be ready to face the mic, and I know you are going to give a super performance. So let's now invite Arushi. You are clapping to Swami Vivekananda. It is the young people who are the hope of the future. They are the ones who will shape our nation of the destiny. As we gather here today, I ask you, what will our legacy be? Will be the generation that changed the course of our nation's history? Good morning to all present here. Today I, Arushi, of BCom first year, honored to share Vivekananda's vision for a better future, and I invite you all to join me on this journey. If there is any land on this earth that can lay claim to be the blessed Punya Bhumi, to be the land to which all souls must come to the account for karma, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, spirituality, generosity, the land of introspection and spirituality. It is India. Swami Vivekananda was disciple of Ramakrishna Paramahamsa and the founder of Ramakrishna Man and Ramakrishna Mission. His birthday, celebrated as National Youth Day in 1994, the Government of India declared and decided to observe the National Youth Day from 1985 onwards. Swamiji, a philosopher, had burning zeal in his heart and vocal exponent of Indian philosophy. He had burning zeal in his heart to do something for India under the subjugation of British rule. As Vivekananda was a great observer of human mind and the human society at large, he wanted muscles of iron as well as nerves of steel. He wanted the youth to possess intermittent will and strength to drink up the ocean. Our great national sin is the neglect of the masses, and that is one of the causes of our downfall. In India, there are two great evils. Firstly, trampling on women. Secondly, grinding the poor through caste restrictions. Why is that? Our country is the most backward and the weakest of all the countries. The men have turned the women into mere manufacturing machines because Shakti is held in dishonor there. Look at our girls becoming mothers below their teens. Good Lord, yatra naryastu pujyante ramante tatra devta. This means the gods are pleased where women are held in esteem, said old mythology. We are horrible sinners, and our degradation is due to our calling women gateways to hell, and so forth. Goodness gracious, there is all difference between heaven and hell. What is the way to regeneration? The first step in this regard is uplifting the masses by restoring their lost individuality and faith in themselves. He also laid the great emphasis on education
Lord Buddha and Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a great nationalist of India and he had immense faith in the youth of this country and said that they would work out of his ideas like lions. That you may my fire, that you may be intensely sincere is the constant prayer of Swami Vivekananda. If will you disappear, then you will hear the inaugural shot of renounced India ringing with the voice of a million thunders and reverberating throughout the universe. Vah Guru ki Fateh, victory to the Lord. To wrap up, let us pledge, arise and away, and see her seated here on an eternal throne, rejuvenated, more glorious than she ever was. This motherland of our land. Thank you. Respected Swamiji Maharaj, Swami Vivekananda Ji Maharaj, our respected judges, all other monks of Sri Ramakrishna Mission Chandigarh, and my dear fellow students, I extend my warm greetings to all of you in this beautiful morning. So, we are here to celebrate our anniversary of 11th September, which was National Swamiji's elocution to in the World Religion Congress. So, who was Swamiji? Let's begin with that. So, is Swamiji only involved in that National Congress? Is he only a mere religious leader? He is not. According to Ramakrishna, he is Shiva, who come here, born here to introduce intellectual consciousness among people and to bring youthfulness among us. And according to Netaji, he was spiritual father of our nation. During our national freedom movement, he brings such an inspirational power among the youth that like Swami Netaji Subhash Chandra Bose and other freedom fighters lead a great movement that free our nation. So, to start with the role of nation building to the youth, what we are lacking, we should understand that first. So, what we are lacking? Our first lacking is the education system. Education system, Swami said that is it mere bookkeeping or is it a diverse knowledge? It is not. Education which is something which brings consciousness to the nature, through which we can understand the nature and we can have grow consciousness among us. But unfortunately, in present scenario, it is truly missing from us. So what should we do? We should embrace ourselves in the education, the true essence of education. And what is the role of youth? It is not only to get himself education. It is as a youth, you should extend your arms to educate ourselves, to our young generation through scientific education, because that is the most important thing according to Swamiji. Because it is not, according to Swamiji, education is not just remembering something, it is to understand the nature. In the second thing, we need to develop a spiritual means among us. How we can do? We can do only through Vedanta education, through Upanishad education. So we should, as a youth, should incorporate that youthfulness and that Vedanta education among us, which will lead us to the true essence of consciousness among us. Now, the purity of soul only depends on the Brahmacharya, that is the true essence of youthfulness. So we should incorporate among us that will lead truly our to grow us as an intellectual. Now, with education, we are lacking also physical weakness. Swamiji once said that we are weak, very weak, and we itself getting proof of it. In the Paris Olympic recent, we didn't deserve a single gold medal. What is that imply? That we are not physically fit as a society. So, what should we do? We should practice more and more physical sports. That's what he always said. And he said that we are more close to heaven through football, not Gita education. This is the true essence of sport, and through that we can grow our spiritual consciousness. We can grow through
football education also. And he also embraced the essence of self-belief. He said that how can you believe in God if you cannot believe in yourself? So as a youth, you should believe in yourself, then in the God who truly grow as a personality. He said that extend your arms to the universe and embrace it with love. That is the true essence of youth, and that's how we can grow as a nation. Today we are 60 crore as a youth population. We can grow. We are a youth powerhouse. So with that we can truly grow as a nation if we can incorporate these ideas among us. Thank you very much. Thank you for that very useful session. पैदा करता है अपनी शक्ति पर विश्वास करो, निडर बनो और महान कार्य करो. Good morning and namaskar everybody present over here. Respected judges, talented individuals and all the esteemed guests. Ladies and gentlemen, भाइयों और बहनों, in a world filled with distractions and challenges, the role of youth has never been more critical. Today, I stand before you to discuss the timeless wisdom of Swami Vivekananda ji and how his philosophy continues to inspire and guide the youth of today's generation. Swami Vivekananda ji, a towering figure in Indian history, was not only a spiritual leader, but also a visionary who recognized the immense potential of youth in shaping the future of this nation. His teachings continue to resonate within our hearts, emphasizing the critical role of youth in empowering our nation, India. He saw the youth of our country as the most dynamic and energetic segment of our society and the driving force behind societal change and progress. One of his core messages to the youth was the importance of self-reliance and confidence. He encouraged the young people to believe in their abilities. The concept of seva or selfless service was highly preached by him. Swamiji believed that spiritual strength is essential for personal and national development. Nationalism, according to him, is not about blind allegiance, but about a deep sense of responsibility towards one's country. Swamiji's positive thinking resonates through his powerful words. Take up one idea, make that idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be infused of that idea. This is the way to success. This is the way to success. He believed that young people should develop strong moral and ethical values and demonstrate integrity in their actions. In today's rapidly changing world, Vivekananda's emphasis on innovation and technology is more relevant than ever since. He believed that the youth should be open to new ideas and new circumstances. Swamiji once quoted, "In a day when you don't come across any problems, be sure that you are traveling on the wrong path." He believed that the youth should develop the resilience and determination needed to overcome the obstacles and achieve their goals. While deeply rooted in Indian culture, Swamiji also had a global perspective. A global perspective, according to Swami Vivekananda, is about being open to new ideas and approaches from all around the world. He also emphasized the need for an education system that nurtures critical thinking, creativity and moral integrity, enabling the youth to become responsible and powerful citizens. He said, "We want an education by which character is formed, the strength of the mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet." Swamiji's faith in the youth was unshakable. He once said, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers." His words remind
the youth of today, I, you, and we all must hold in our hearts and minds the vision of arise, awake, and stop not till the goal is reached. Jai Hind, Jai Bharat. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. These golden words of Swami Vivekananda ji inspire everyone to arise out of their hypnotized mind, move ahead, and should not stop until we attain the goal of self-realization. Namaste. I, Ganesh, from St. Vivekananda Millennium School at Champion Township, Tinjore. Today, I am going to share the valuable teachings of Swami Vivekananda ji through his Chicago address. Brothers and sisters of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who have been the delegates from the Orient have told you that these men from far-off nations may well get the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both universal and tolerant acceptance. We believe not only in universal toleration, but we also accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosoms the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which the Holy Temple was shattered by Roman tyranny. So be proud of your religion. Thank you. यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कलर आज के विषय स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से सशक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। इन पंक्तियों से परिचित कराने वाले विश्व ख्याति प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1867 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण जी से मिलने के बाद उनका जीवन धर्म की ओर बढ़ गया। विवेकानंद जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने भारतीय समाज में प्राण संपादित किए। उन्होंने भारत की वेदांतिक परंपरा को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। स्वामी जी के विचार लोगों में नवी ऊर्जा का संचार करते थे। स्वामी जी द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर ही एक भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार किया जा सकता है। केवल 39 वर्ष और 5 माह की अल्पायु में स्वामी विवेकानंद जी चिर समाधि में लीन हो गए, लेकिन इतने से समय में ही उन्होंने भारतीय समाज में युवाओं की भूमिका को प्रदर्शित किया। किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हमें उस राष्ट्र के निर्माण में आने वाली समस्याओं का पता होना चाहिए। इन्हीं समस्याओं का पता करने के लिए स्वामी जी पैदल ही भारत की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने भारत के समाज के सभी लोगों से मुलाकात। एक विलक्षण बुद्धि होने के कारण वो इन समस्याओं का हल सोच पाए और भारत को उसका गौरव लौटाने में सफल रहे। स्वामी जी का मानना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा अगर जागरूक है तो वह राष्ट्र अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। उन्होंने युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे युवाओं में उम्मीद देखते थे। वे युवाओं को परिवर्तन का अगर रूप मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं, यदि मुझे तो ऐसे युवा मिल जाए जो निस्वार्थ रूप से अपना सब कुछ न्यौछावर करके मेरे साथ काम करे तो मैं इस भारत की काया पलट दूंगा। स्वामी जी कहते हैं,
राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ता है जितना लोगों में शिक्षा का प्रसार होता है। स्वामी जी कहते हैं हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो और लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्वामी जी कहते हैं हमें लोगों को आम बोलचाल की भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। युवा का अर्थ केवल पुरुष नहीं है, स्त्रियां भी सशक्त राष्ट्र निर्माण में बराबर की भागीदार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी स्त्री शिक्षा पर भी बल देते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षित एवं धार्मिक महिलाओं के घर ही महापुरुष जन्म लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि युवाओं की मांसपेशियां लोहे के समान है और उनके हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। स्वामी जी का मानना है कि एक राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ेगा जितना उस देश के लोगों में एकाग्रता होगी। स्वामी जी कहते हैं स्मरण रहे कि हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में रहता है और हम युवाओं का यह कर्तव्य है कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को सजग बनाएं और उन्हें जागरूक बनाएं तथा कहें कि केवल आलस्य के साथ बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। स्वामी जी चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग ले। इससे न केवल समाज बेहतर बनेगा बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि बाकी हर चीज की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सशक्त, मेहनती और आस्थावान युवा खड़े करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी कहते हैं कि युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। स्वामी जी कहते हैं कि संभव की सीमा को जानने का यही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। स्वामी जी केवल एक महान आत्मा नहीं, एक सोच है और हम युवाओं को इस सोच को आत्मीकरण करने की आवश्यकता है। अंत में स्वामी जी की पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। युवा अपना ध्येय समझ ले तो एक दृढ़ और सशक्त भारत की रचना हो सकती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज ऋषिका। महामंडले पुण्यभूमे पदर्थे पतद्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, मैं ऋषिका आप सभी के समक्ष आज सशक्त राष्ट्र बनाने में हम सभी युवाओं की भूमिका को प्रदर्शित करने आई हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, अगर आप भारत राष्ट्र को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी जी के अनुसार कोई भी राष्ट्र सशक्त तभी बनता है अगर उसका युवा सशक्त हो। इसलिए युवाओं का आत्मसंयमी, आत्मज्ञानी, आत्मविश्वासी होना अति आवश्यक है। परंतु आज का युवा स्वयं को जब समस्या से घिरा हुआ, सीमाओं में बंधा हुआ पाता है, तब स्वामी जी के 4 मूल मंत्रों से उसका निवारण हो जाता है: शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मंत्र। परंतु क्या सच में हम स्वामी जी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं? आखिर क्यों हमने आपसी मतभेद का पौधा पनप रहा है? मेरे विचारों से इन सभी का कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जहाँ पर हम कहते हैं कि गीता केवल एक गीत है और वेदांत केवल एक सिद्धांत की गीत। इसी विषय में एक मैथिली शरणगुप्त जी ने विद्यार्थियों को कहा था, हम कौन थे, क्या हो रहे हैं और क्या होंगे अभी। इसलिए बेहतर होगा कि हमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो ताकि तकनीकी शिक्षा दी जाए जिससे हम काम आ सके, बजाय इसके कि हम इधर उधर घूमें। क्योंकि यथा चंदन भारस्य वेदानुचंदनस्य, अर्थात चंदन होने वाला धरा केवल भाग जाता है, चंदन का मूल्य नहीं। उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने में एक महिला का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, अन्यथा उसका सर्वनाश वह है। रामायण और महाभारत भी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। परंतु फिर भी स्त्री और पुरुषों में भेदभाव क्यों किया जाता है, जबकि वेदांत कहता है कि
सभी प्राणियों में एक ही चेतना और आत्मा विद्यमान है। अरे एक वैदिक और उपनिषद युग में मैत्रेयी और गार्गी जैसी पूज्य स्त्रियां थी जिन्होंने ब्रह्मचर्य में भाग लेते हुए विश्व का स्थान ग्रहण कर लिया था, और दूसरी तरफ आधुनिक युग में उसके अधिकार केवल सिद्धांतिक ज्यादा और व्यवहारिक कम रह गए हैं। आखिर क्यों हम बार बार भूल जाते हैं कि यत्र नार्यस्तु भूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आखिर कैसे 40 मिलियन लोगों ने 300 मिलियन लोगों पर पिछले 200 सालों से राज कर अपने राष्ट्र को सशक्त बनाया? कैसे? क्योंकि उन सभी में आत्मविश्वास और संगठन था, और हम में केवल एक डर। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। इसलिए युवा का आज्ञाकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्व तुमसे क्या कहता है कि तुम नदी में छलांग लगाकर मगरमच्छ को पकड़ो, तो तुम पहले नदी में छलांग लगाओ, उसके बाद उसके कारण पूछो कि मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था। आखिर कैसे महाराणा रणजीत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी जैसे शासकों ने कम उम्र में ही राजगद्दी में बैठकर संपूर्ण विश्व में अखंड भारत का परचम लहराकर राष्ट्र को सशक्त बनाया था? कैसे? क्योंकि वे सभी ईर्ष्या, द्वेष, कलह से दूर रहते थे। आखिर कैसे जापान, इजराइल, चीन और कोरिया जैसे राष्ट्र तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं? कैसे? क्योंकि इन सभी राष्ट्रों ने अपनी मातृभाषा में तकनीकी क्षेत्र को आगे बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार हम भी तो अपने राष्ट्र में तकनीकी क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण कर अपने राष्ट्र को सशक्त बना सके। स्वामी जी कहते हैं कि बदलते समय के साथ हमें अपनी संस्कृति और अध्यात्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही वह अध्यात्म और संस्कृति है जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद और ग्रंथ जैसी रचनाओं ने भारत को संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान दी थी। हालांकि समय चलते इन सभी की भाषा शैली हमारी भाषा शैली से विलुप्त होती गई, परंतु फिर भी आज का युवा और संस्कृति को मेलजोल से हम राष्ट्र को सशक्त बना सकते हैं। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। धन्यवाद। अवेलेबल है, तो आप QR कोड को स्कैन करके उस फोरम का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे निरंतर हमारी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, और एक तरीके से हम स्वामी विवेकानंद के सपने को साकार भी करेंगे कि हमारा भारत रियली बहुत ग्रेट बनने वाला। नेक्स्ट वी हैव अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत स्वामी विवेकानंद जी, जितने भी प्यारे विद्यार्थी, मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम अमनप्रीत कौर है ते मैं पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ की विद्यार्थी हूँ। मैं अपने भाषण की शुरुआत 2 लाइनों ਨਾਲ करना चाहती हूँ। जो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा अपनी स्पीचां ਵਿੱਚ नॉर्मल फीलिंग प्रसारित करने ਲਈ बोलते सन। उठो, जागो ਅਤੇ उदों तक ना रुको ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ अपनी मंजिल ਨੂੰ प्राप्त ना कर लो। प्यारे भारत के युवा, ਤੁਸੀਂ इस महान राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हो। ਤੁਸੀਂ जो ताकत, जोर ਅਤੇ समर्था रखते हो
at Sri Pradipti Ayurvedic College Hospital, Chandigarh. Today I am going to present my view on the topic of youth empowerment, role of youth in building a strong nation, according to Swami Vivekananda. Let's start. India is the largest democratic country in the world and second largest populated country in the world. It comprises 65% of youth, which is and this is already important fact that how important this asset, youth asset is. It's been 28 years since freedom. Still, India is suffering from some diseases like corruption, crime against men and women, unemployment, and so many other things. Youth are the important aspect in the society. We should include them and encourage them to have a change in our society. India is the biggest democratic country in the world and still it lags in achieving economic and social political growth. The two things which our freedom fighters fought for is freedom and the growth of the nation. But still we lag in these two things since freedom. The basis of all systems, social or political, rests upon the goodness of the men. No nation is great because of its constitution or law. It's great because of good men and its good deed. We, the youth of India, are responsible for the change and progress and achievement of nation. We should come along and have a pledge to make a change in ourselves, then a change in society, so we can carry our nation forward. At last, our motherland will be raised with the power of youth, its spirit with peace and love, with great young minds. By such empowerment, our motherland, India, seems to be rise from the greatest darkness, sorrows and struggles. Thank you. जो वीर सुयश ज्ञान में है ढील दिखलाता, जो वीर सुयश गान में है ढील दिखाता, वह देश के वीरत्व का मान घटाता, वो देश के वीरत्व का मान घटाता। सब वीरों ने किया है सम्मान कलम का, सब वीरों ने किया है सम्मान कलम का, और वीरों का सुयश ज्ञान है अभिमान कलम का। नमस्ते, मेरा नाम चिन्मय है एवं मैं श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल की छात्रा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हजारों वर्षों की परंपराओं से कुछ भारत किसी समय विश्व गुरु कहलाता था। जब आज के उन्नत एवं सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्र अस्तित्व से भी हीन थे, उस समय भारत भूमि पर वैदिक रचनाएं लिखी जा रही थी। वैदिक मंत्रों का गान एवं यज्ञों की पवित्र ज्वालाओं से उठता हुआ धुआं पूरे वातावरण को स्वच्छ कर रहा था। भारत की इसी महान संस्कृति को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने वाले महान मानवतावादी चिंतक थे स्वामी विवेकानंद। हमारी आज की चर्चा का विषय है स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से सशक्त राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। सशक्त राष्ट्र आखिर क्या है? सशक्त राष्ट्र भूमि का वह भाग जो कि स्वतंत्र हो, जो स्वयं दीप्यमान हो, जो किसी के द्वारा दबाया ना जा सके, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 7वें सबसे बड़े राष्ट्र में इस दुनिया के 66% युवा रहते हैं। अतः भारत एक युवा राष्ट्र है। भारत में पैदा होने वाले महान मानवतावादी चिंतकों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। उनका जन्म कोलकाता के सिमुलिया नामक स्थान पर माता भुवनेश्वरी देवी एवं पिता विश्वनाथ दत्त के घर पर हुआ था। स्वामी विवेकानंद से हम सभी परिचित हैं। उनके द्वारा शिकागो में दिए गए भाषण से हम सभी परिचित हैं। रोमा उनके भाषण के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि कोरे कागज पर कुरेदे हुए शब्दों को जो कोई भी पढ़ता है तो पढ़ने वालों के हृदयों में मानो विद्युत का स्पंदन होता हो। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान के रूप में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस का उद्देश्य है भारत में जो भी युवा अच्छाई एवं सच्चाई को बढ़ावा देते हैं, उनके कार्य
सराहना करना एवं उनको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना। सामान्यतः व्यक्ति अपनी असफलताओं का आक्षेप दूसरों पर डाल देता है एवं ईश्वर पर डाल देता है, अपने भाग्य पर डाल देता है, परंतु शक्तिशाली मानव वो है स्वामी जी के विचारों के अनुसार जो उठकर खड़ा हो एवं कहे कि मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। स्वामी जी कहते थे कि हमें अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहिए। सामाजिक ज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों को ही वो विश्व में ज्ञान फैलाने का एक साधन मानते थे। उनके अनुसार इन दोनों ज्ञान को फैलाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा किसी भी प्रफुल्लित समाज का आईना है, उस समाज का दर्शन हमें करवाती है। इसी शिक्षा के ऊपर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य महज परीक्षाएं पास करना नहीं होना चाहिए, परंतु शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण की ओर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य बचपन से ही या फिर जन्म से ही दैवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। सत्य, निष्ठा, अहिंसा एवं समर्पण जैसे गुणों को अपने अंदर लाने से, इन गुणों का विकास करने से ये दैवीय गुण मनुष्य में और भी ज्यादा हद तक पैदा हो सकते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम, अर्थात सब कुछ सत्य से ही धारण किया जा सकता है। परंतु आधुनिक युवा समुचित प्रशिक्षण के अभाव में कुछ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारी भीड़ का इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि यह पूर्णतः सत्य नहीं है, परंतु फिर भी सच्चाई को हम नकार नहीं सकते हैं। यदि स्वामी जी के भाषण में, उनकी शिक्षाओं में इन समस्याओं का हल ढूंढा जाए जो कि हमारा देश आज देख रहा है, तो उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे कि हमारे देश को बहुत आगे तक लाया जा सकता है। हमारी शिक्षा का आधार मूल्यवान शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए जिससे कि भारत को आगे तक पहुंचाया जा सकता है। 4 जुलाई 1902 को रामकृष्ण मठ में ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण किए हुए स्वामी जी चिर निद्रा में लीन हो गए थे, परंतु उनकी कीर्ति युगों युगों तक जीवित रहेगी। महान आत्माओं का वास स्थान होता है ज्ञान। मनुष्यों का जितना भी ज्ञान की वृद्धि होती है, उतनी ही महान आत्माओं के आयु की वृद्धि होती है। महान आत्माओं की आयु की गणना करना हमारे बस की बात नहीं है। इसी पर विचार करते हुए कवि कहते हैं कि जो शख्स सूर्य से दीप्त हो चंद्रमा का नहीं वश कहाँ, जो शख्स सूर्य से दीप्त हो चंद्रमा का नहीं वश कहाँ, जिस गगन पर बढ़ी धूप हो व्यर्थ हो जाती है अमावस की वहाँ, जिस गगन पर बढ़ी धूप हो व्यर्थ हो जाती है अमावस की वहाँ। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उठो, जागो और जीवन का साध्य प्राप्त करो। तुमने कहा है कि राष्ट्रहित एक मेरे है, सांस एक राष्ट्रहित शब्द ज्ञान, सांस राष्ट्रहित शब्द ज्ञान, कदम मिलाकर चल पड़े धर्म और विज्ञान। सत्य और संस्कृति हुई तुम्हें पाकर महान, सत्य और संस्कृति हुई तुम्हें पाकर महान। देव संस्कृति का किया तब उत्थान, सत्य और संस्कृति का किया तब उत्थान। करता है धिक्कार भी ऋषि तेरा जयगान। अंतरयात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम, अंतरयात्री ने कभी लिया नहीं विश्राम। दिशा के वक्ष पर लिखा है तेरा नाम। रोम पुलकित हुआ। हुई ये भूमि भारत भूमि पवित्र हुई, भारत भूमि पवित्र। सर विवेकानंद
के घोष गूंजा इस सृष्टि में भारत का जय घोष। धन्यवाद। Show it here. Prize is yours. So next I invite Vipasha. Symposium ID number S048. Vipasha. If you win, you may lead. If you lose, you may guide. This powerful quote by Swami Vivekananda encourages taking bold steps and seeing both success and failure as opportunities for growth and leadership in your life. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Vipasha, a student of GCG 11. Currently, I am in BA 3rd year. I am honored to share how Vivekananda teachings illuminate the vital role of young people in national development. Swami Vivekananda viewed youth as the pillar of nation's strength. His vision extended beyond future leadership to the present potential of youth to drive progress. To build a robust nation, Vivekananda emphasized several core principles: character building, integrity, courage, and self-reliance are essential. Vivekananda asserted, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Developing these virtues is the foundation for stable and just society. Self-reliance. Mental and material self-sufficiency are crucial. Youth should believe in their abilities and rise above limitations to drive innovation and leadership for national development. Social responsibility. Engaging in community service build a more equitable society. Vivekananda principle that service to a man is service to a God. The importance of addressing social issues and serving the underprivileged. Spiritual growth. True strength comes from within. Setting spiritual balances enhance the ability to face challenges and contribute meaningfully to society. Education. Vivekananda advocated for a holistic education system that supports both intellectual and moral strength, preparing this youth to lead and innovate. Unity and national integration. Embracing diversity and fostering a common identity are essential for national cohesion. You should work towards building a united and strong nation. Leadership. Effective leadership involves visionary thinking and guiding others toward a sharing vision. Cultivating these qualities enables youth to drive progress and address societal challenges. Can you all imagine a nation where every young person adopts this principle? That society would be just, innovative, and resilient. At last, I will conclude that Swami Vivekananda's teaching a clear framework for a youth empowerment by focusing on character building, self-reliance, social responsibility, spiritual growth, education, unity and leadership. Youth can transform and strengthen our nation. Thank you. I invite next. My faith is in the younger generation, the modern generation. They will work out the whole problem like lions. When you have men and women who are ready to sacrifice their everything for their country, sincere to the backbone, when such men and women arise, India will become great in every respect. Good morning to everyone, respected judges, respectable
monks, my warm good morning to everybody. These were the words of great Indian saint Swami Vivekananda, which displayed his unshakable, unwavering faith in the youth of Mother India. Swami Vivekananda's inspiring personality captivated all. He was truly a role model. I think what would be an inappropriate word to use for him, because he still stands as an inspiration to all of us, including me. And that is the only reason that today we stand here discussing the role of youth in building a strong nation. But according to Swami Vivekananda, he said, leaders are not made overnight, nor can leadership be passed through hereditary lineage. Leaders are to be groomed with highest values, knowledge and awareness of society and strong sense of purpose. Swami Vivekananda said, my hope of future lies in the youth of character, intelligent, renouncing all for the service of others. Well, today, India is one of the youngest countries in the world. But you know what the good news is? My dear friend, most of the population of India is youth. About 65% of the population of India, according to statistics, is youth. That is the good news. We have the power today. We can do anything. But the question is that, is the youth of the youngest country of the world in a state to progress? Is it? Well, the youth which is uneducated, poor, hungry and unemployed is easily diverted to bad means. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. India is to be raised, the poor are to be fed, education is to be delivered and priestcraft is to be removed. Swami Vivekananda's message was very simple and powerful and broke through the shackles of caste and creed, and it spoke of a language of universal brotherhood and religious tolerance. Do you read the history of India? Do you know who was Ramanuja? Who was Shankara? Who was Chaitanya? Who was Kabir? Who were all these great preachers, one following the another, like a legacy of their first magnitude? They all tried. They all tried. And their work is still going on. Sky is the limit, my dear friends. Sky is the limit. The youth just needs to take initiative. And step by step, we shall progress. The first step should be to regenerate our individuality. That makes a whole world of difference. With whole due respect to Western nations, the lines of progress which they have set up, they may be good for them, but they are not good for us. They are not good for us. Next is to realize that religion and religion alone is the life of India, and without it, India will die. No improvement in India is possible without religion. The most important service to be done next is education. Education. Education alone, my dear friend. Education alone, my dear friend. It is said that if you have assimilated by heart 5 ideas and have made those 5 ideas your life and heart, then you have more knowledge than any person who has got by heart a whole library. Well, do you know why is that even after so many advancements post-independence, our country is still labeled as backward? Do you know why? Because Shakti is held in dishonor here. Yatra nayastu pujyante, ramanta tatra devata. अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमन करते हैं. सबने सुना होगा कभी ना कभी. अभी बहुत सारे लोग बोलते भी गए हैं. It is very difficult to understand why in this country women face so much disrespect. All nations which have prospered because they have given respect to their women. I want to say that we, the youth of India, the mother of all civilizations, the mother of all religions, the mother of all sciences, are very capable of regenerating our country, making it rise and shine as the Vishwaguru on the global platform by following the high ideals of love and peace, giving the message to all our sister nations of Vasudhaiva Kutumbakam, that is universal brotherhood. Together, we shall rise again. Slow and steady, we shall win the race. I have full faith in you people. I see so many glowing faces here, full of energy. I feel so honored and humbled that I have been given this opportunity to speak here among such great speakers.
We can do this together. Thank you so much. Everyone, I am Vidovita and today I will be speaking on the topic, the role of youth in building a strong nation. So, first of all, what do you mean by a strong nation? Is it a nation that wages war, runs conquest, steals power? But history tells us otherwise. India has never been one to wage wars. Instead, we have always accepted outsiders with open arms and unified them with our hearts and souls. And this is where we contemplate the views of Swami Vivekananda, for he is an embodiment of India herself. A nation like India, which has been dedicated to selflessness for centuries. For such a nation, this strength is not a worldly one, it is a deeply spiritual one. As Swamiji has said, let everyone be taught that the divinity is within and that everyone will work out their own salvations. And that is the way to build a strong nation. With a youth population of more than 50% here, we are not weak. As Swamiji said, put yourself to work. You will find such power coming to you that you will find it hard to bear. Even the least good done for others awakens the powers within. Even the thinking the least good about others, it instills into their heart the strength of a lion. We, the young generation, we have to culminate that strength. We have to organize that strength towards a common focus. We have to coordinate our willpower to take our nation to great heights, as it says in the Rig Veda. Samgachatvam, samvadatvam, samvohanansi janatam. Be thou all of one mind, be thou all of one thought. But standing in the 21st century, this kind of spirituality may seem out of context to many people, especially to the younger generation. This is because throughout centuries, religion has been interpreted so crookedly by many selfish leaders that most youth of today are either losing their complete faith in religion or they're engaged in extreme religious bigotry. Now, rising above all this religious fanaticism and restoring that faith is not easy, but we must understand the importance of cultivating spirituality and what we truly are as a nation. And this is where Swami Vivekananda's teachings can help us, for he explains with irrefutable logic. Even a highly scientific-minded person must admit that whatever technological advancements we may make, it is obvious that if we do not have the morality, that will be destroyed in no time. A strong nation is built upon strong character, and a strong character can only be built upon the morality of spirituality. We, in today's youth, we are plunging into an abyss of darkness, an abyss of materialistic pursuits. Every day, we are frantically rushing from one sense pleasure to another. And when we are not getting our fulfillment or satisfaction out of anyone, we are sinking down deep into the darkness of our minds. Why should that be? Ancient Indian philosophy teaches us to travel from darkness to light, from death unto immortality. If we can imbibe that, incorporate that spiritual knowledge within ourselves, the youth of today can take India to unthinkable heights. We can radically revolutionize the roots of all our political and social maladies. And that, everyone, is Vivekananda's dream India. That is what we can achieve if we take some time out of our busy schedule to introspect on what we truly are. We cannot go out into the world and represent what is false. We cannot do that. For that, we must have that Viveka, that power of distinction to tell which of our cultural practices are deteriorating to humanity and which are the ones that truly enliven us. And this can be possible only through education, through a proper channel of education that leads us to seek our lost individuality. As Vivekananda had said, education is not just assimilation of ideas that are put into the brain. It is life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. And when I say that my education has been holistic, I will not mean it because of my high school grades, but I will mean it because of those teachers who have instilled into my adolescent thoughts the ideas of morality, of perseverance, of empathy. So, standing at the edge of precipice today, let us all unitedly face the cause. Let us all forget about our degrees and not focus on a prospering CV, but set our sights on a strong and educated nation. Because with all our hearts in the right place, nothing can be too idealistic to realize. And this is our country. If we will not do for it, then who else will? Let us all truly arise, moving and stop not till the goal is reached. Thank you. Morning to everyone present here. I would like to start my education by one of the most inspiring quotes by Swami Vivekananda. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. I would like to briefly tell you about Swami Vivekananda, who was a prodigious thinker, a master orator, and a fierce patriot. He introduced Hinduism in Chicago around
would like to talk about an example of how a painter really has an idea of what he has to paint on canvas. The book starts by praising our motherland, which talks about religion, philosophy, etc. Religion is a major part of Indian politics, culture and tradition. It also talks about 4 castes that appears with conformity of law. Caste system. By caste system, Swami Vivekananda tells us to make everyone a Brahmin, not just by chanting the rituals or performing the traditions, but by following the ideal of humanity. He knows the positive life, as caste system should not go, instead it should be readjusted. Trampling of women and grinding through a caste system is one of the other social evils which should be emphasized. He also emphasizes change in idea of religion which is needed for improvement of India. He talks about ideals of India, which is renunciation and service. Religion is not only responsible for such conditions, but instead, it should be readjusted. Hindu faith can help us to change it. The masses are sleeping in the country. We can awaken them by feeding the poor, spreading education. Women should not be considered a manufacturing machine by men. Instead, they should be considered as a living embodiment of the divine that should be raised in right position and right way. At last, I will conclude by saying that Swami Vivekananda calls for young men who can devote their heart and soul to this duty of raising the masses of India. He awakens, inspires the young people of India and promotes right education and work for women. Thank you. Presenting his presentation before you. So I invite Pradeep Kumar, the final contestant. Let's give a round of applause. भारत के गौरव के मतलब स्वामी विवेकानंद जी के भाव के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाते थे और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि उठो और जागो, मतलब ये कहते उठो और जागो, हम जब तक मंजिल ना मिले जब तक रुको नहीं। एक था स्वामी विवेकानंद जी का। और जैसे कॉलेज स्कूलों में जब पढ़ाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ, तो सभी बच्चे में मतलब एक तरफ से मतलब इनका उत्सव होता है। स्वामी विवेकानंद जी थे कौन, मतलब कितने मतलब सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे ऐसे भारत में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। आप सभी जो है ये स्वदेश मंत्र स्वामी जी द्वारा जो दिया गया है, मैं कहूंगा और आप मेरे पीछे आवृत्ति करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। बोलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्व त्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर
साहस का आश्रय लो, साहस का आश्रय लो, साहस का आश्रय लो, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, और प्रत्येक भारतवासी और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सब मेरे भाई हैं। सब मेरे भाई हैं। भारतवासी भारतवासी मेरे प्राण हैं, मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है, काशी है। भाई बोलो की भाई बोलो की भारत की मिट्टी भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ माँ, माँ माँ, मेरी दुर्बलता मेरी दुर्बलता और कापुरुषता और कापुरुषता दूर कर दो, दूर कर दो। माँ माँ, माँ माँ, मुझे मनुष्यत्व दो, मुझे मनुष्यत्व दो।